coming to scleroderma. So scleroderma basically it consists of two words. One is sclero and the second is derma. So sclero का क्या मतलब होता है? Sclero basically means heart and derma means skin, है ना? So scleroderma basically means hardening of the skin. So from a logical point of view, any condition in which there is hardening of the skin should have been known as scleroderma, है ना? For example, the hardening of the skin can be seen in carcinoid syndrome, then in cutaneous amyloidosis, scleroderma, and a lot of other diseases also. But they are not known as, they are not included in the umbrella term scleroderma. So when we use the term scleroderma, we are basically referring to two disorders, right? One is known as generalized scleroderma, which is also known as systemic sclerosis, and the other one is known as a localized scleroderma, which is also known as morphea, right? So generalized form is known as systemic sclerosis and the localized form is known as morphea. So there is a more generalized involvement of the skin, whereas the involvement of the skin is more localized, right? And internal organs are frequently involved. They are not involved in morphea or rarely involved. And autoantibodies are frequently positive, right? They are negative usually. And vascular changes are predominant or very prominent in case of systemic sclerosis. So as you know, systemic sclerosis may blood vessels undergo obliterative and arteriopathy, right? But these are not found in case of morphea, right? So see, these are some differences between the two. So we are going to talk about morphea, ठीक है? तो morphea basically है क्या? What is it? So it's an autoimmune disease. Right, it's an autoimmune disease where the target is the skin. ठीक है, तो अगर आपको और कुछ नहीं मालूम है अबाउट मॉर्फिया, जस्ट अंडरस्टैंड दैट इट्स एन ऑटोइम्यून डिजीज इन्वॉल्विंग द स्किन. So coming to the etiopathogenesis of morphea. तो सारे ऑटोइम्यून डिजीजेस का etiopathogenesis बेसिकली सिमिलर ही होता है. There are some genetic factors and then there are some environmental factors. Okay, तो जेनेटिक फैक्टर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द एथनिसिटी. तो कुछ डिजीजेज जो होते हैं दे आर मोर कॉमन इन ब्लैक्स, फॉर एग्जांपल लूपस, बट मॉर्फिया इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फाउंड इन वाइट्स, राइट? सो इट्स अ वाइट एथनिसिटी, राइट? सेकेंड इज इट इज़ मोर कॉमन इन सर्टेन एच एल ए सबटाइप्स. तो एच एल ए डी आर बी वन, जिन पेशेंट्स के पास एक्चुअली डी आर बी वन होता है दे आर मोर लाइकली टू डेवलप मॉर्फिया. एंड थर्ड इज द प्रेजेंस ऑफ अ फैमिली हिस्ट्री. अब फैमिली हिस्ट्री में ज़रूरी नहीं है कि मॉर्फिया की ही फैमिली हिस्ट्री हो, बट द फैमिली हिस्ट्री में बी प्रेजेंट फॉर एनी ऑटोइम्यून डिजीज, राइट? फॉर एग्जाम्पल थायरॉइडाइटिस, आर्थराइटिस, लूपस एट्सेट्रा. सो सारे ऑटोइम्यून डिजीज में बेसिक जेनेटिक कंपोनेंट्स सेम ही होते हैं. नाउ कमिंग टू द इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स. तो इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट इज एज. तो जितने भी ऑटोइम्यून डिजीज होते हैं ऑलमोस्ट ऑलवेज दे आर मोर कॉमन इन दी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, राइट? तो मॉर्फिया भी मिडिल एजेस में सबसे ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है, एक्सेप्ट फॉर वन वेरिएंट विच इज़ मोर कॉमन इन द यंगर एज ग्रुप. सो वील टॉक अबाउट दैट, राइट? तो जस्ट रिमेंबर देयर इज सम रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप दैट इज इन्वॉल्व. सेकेंड इज जेंडर. तो सारे ऑटोइम्यून डिजीज जो होते हैं दे आर मोर कॉमन इन फीमेल्स. तो मॉर्फिया इज़ नो एक्सेप्शन. This is also more common in females, right? So definitely there is some role of hormones. So female hormones, estrogen and progesterone का probably कुछ pathogenesis में role है, but the exact role is not known, right?
Then drugs, कुछ ऐसे drugs हैं which can trigger morphea. For example, balicatinib. This was a drug which was found to have a high chance of triggering morphea, right? And then Borrelia infection. कुछ infectious agents होते हैं, pathogens होते हैं which can trigger the development of morphea or other autoimmune diseases. ऐसा कहते हैं कि वो molecular mimicry वगैरह के through they can precipitate autoimmunity, right? Then some vaccines. कौन कौन सी वैक्सीन्स? तो DPT, MMR, हेपेटाइटिस बी. तो कुछ स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि ये वैक्सीन देने के बाद मॉर्फिया डेवलप हो गया जहाँ जहाँ पे वो वैक्सीन लगाई थी एट द साइट्स ऑफ वैक्सीनेशन, राइट. सेकेंडली, इट इज़ ऑल्सो फाउंड कि जो इंजेक्शन साइट्स होती हैं वहाँ पे भी ज़्यादा चांसेस होते हैं मॉर्फिया डेवलप होने के. अब वी डोंट नो वेदर इट्स द वैक्सीन दैट इज़ कॉजिंग द डेवलपमेंट ऑफ मॉर्फिया और वेदर इट इज़ द वेरी फैक्ट कि वो इंजेक्टेबल वैक्सीन है दैट इज़ कॉजिंग मॉर्फिया. But it has been seen that certain injections, for example injection vitamin K etc., इनके इंजेक्शन के बाद भी मॉर्फिया डेवलप हो जाता है. देन रेडियोथेरेपी. तो कुछ सी ए ब्रेस्ट के पेशेंट्स में जिनको रेडियोथेरेपी मिली थी, इट वाज सीन कि जहाँ जहाँ पे रेडियोथेरेपी मिली थी वहाँ वहाँ पे दे डेवलप्ड मॉर्फिया. So definitely it has some role, but the exact role is not known. So coming to पैथोलॉजी. तो पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें और सिस्टमिक स्क्लेरोसिस में काफ़ी ओवरलैप है. तो सिस्टमिक स्क्लेरोसिस में भी इनिशियली देर इज़ एन इन्फ्लेमेटरी स्टेज एंड बाद में क्या होता है, द इन्फ्लेमेटरी आफ्टर द इन्फ्लेमेशन डाइज आउट देर इज़ अ फाइब्रोसिस स्टेज. तो सारी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का अल्टीमेट एंड रिजल्ट इज़ फाइब्रोसिस, राइट. तो ये मॉर्फिया में भी ट्रू है कि इनिशियली देर इज़ एन इन्फ्लेमेटरी स्टेज, एन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी स्टेज, एंड देन देर इज़ अ डिलेड और अ लेट फाइब्रोटिक और डैमेज स्टेज, राइट. तो जो पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं दे डिपेंड अपॉन व्हाट स्टेज इज़ द डिजीज़ इन. So during the inflammatory stage, so there is a lot of inflammatory infiltrate, right. Now अगर किसी inflammatory cell को blood से निकल के skin में आना है, so it has to come through the blood vessel, right. So the inflammatory infiltrate is predominantly perivascular in location, right. So perivascular inflammatory infiltrate. Then कहीं पे भी अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है तो देर इज़ इडीमा. तो नो डाउट यहाँ भी इडीमा मिलेगा. एंड एंडोथेलियल सेल्स जब भी इन्फ्लेमेशन होती है, द एंडोथेलियल सेल्स दे बिकम स्वोलन. सो एंडोथेलियल सेल्स स्वेल अप, राइट. अब फाइब्रोटिक स्टेज में क्या होता है, देर इज़ नो मोर इन्फ्लेमेशन, सो देर इज़ अ पॉसिटी ऑफ सेल्स इन जनरल, राइट. देर इज़ वाइड स्प्रेड फाइब्रोसिस. अब कुछ रह तो गया ही नहीं है. देर इज़ अ लॉट ऑफ फाइब्रोसिस, लॉट ऑफ कोलेजन डिपोजिशन in the skin. There is disruption of the architecture. जो भी normal architecture है that is disrupted, right. And there is flattening of the ridges. जो flattening of dermal papillae हैं and जो ridges होती हैं, dermal ridges होती हैं, they become flattened, right. So this is the pathological finding in the fibrotic stage. So coming to the clinical features. तो clinical features जो होते हैं they basically depend upon two things, ठीक है. वन इज़ इट डिपेंड्स अपॉन द एक्टिविटी, कि क्या एक्टिविटी है उस टाइम पे, वेदर इट्स इन द एक्टिव इन्फ्लेमेटरी स्टेज और वेदर इट इज़ इन द फाइब्रोटिक स्टेज. एंड सेकेंड, इट डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ.
राइट. तो इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे. तो व्हेन द पेशेंट इज हैविंग एन एक्टिव इन्फ्लेमेटरी स्टेज, तो 5 कार्डिनल साइंस होते हैं ऑफ इन्फ्लेमेशन. दैट इज रेड, हॉट, पेन, swelling, and loss of function, right? So these are the 5 cardinal symptoms, right? तो ये यहाँ पे भी इन्फ्लेमेटरी स्टेज में जो लीजन्स होते हैं दे हैव दीज कार्डिनल सिम्टम्स. तो द लीजन्स आर erythematous, they are hot to touch, they are tender, there is induration, right? And there is loss of function. यहाँ पे इतना important नहीं है, but it is also there. So acute inflammatory stage में lesions appear which are erythematous, hot, tender and indurated, right? Usually सेंटर से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है एंड धीरे 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 द लीजन्स दे स्टार्ट इंक्रीजिंग इन साइज. एंड आफ्टर अ वाइल व्हाट हैपन्स इज कि सेंटर में फाइब्रोसिस हो जाता है बिकॉज द इन्फ्लेमेशन इज ओल्डेस्ट, द डिजीज इज ओल्डेस्ट इन द सेंटर एंड इज मोस्ट एक्टिव अलॉन्ग द बॉर्डर्स. तो सेंटर में द सेंट्रल एरिया अंडरगोज फाइब्रोसिस एंड देर इज नो मोर एक्टिव इन्फ्लेमेशन इन द सेंटर. एंड पेरीफ्री में देर इज अ रिंग ऑफ erythema and inflammation which is still active, and that appears like a ring, and this is known as a lilac ring. Right. So activity के basis पे during an acute inflammatory stage these are the symptoms. अब जब inactive fibrotic stage में patient आएगा तो वहाँ पे what will be the clinical finding? Basically depends कि you'll just find fibrosis. तो clinically fibrosis कैसे लगेगा? The skin will appear hard and thickened, and that is exactly what happens. जब fibrosis होगा तो fibrosis होगा the skin might become depressed because it is attached to the underlying structures, right? तो वहाँ पे lesions might appear depressed, right? और in some cases जब excessive fibrosis skin के surface से भी ऊपर चला जाता है तो it might appear like a nodule or a keloid, right? तो वहाँ पे वो किलोइड की तरह अपीयर हो सकता है. तो फाइब्रोटिक और डिलेड या लेट स्टेज में दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स. अब डेप्थ के बेसिस पे अगर देखें तो कैसे होएगा? तो डेप्थ के बेसिस पे द लीजन्स में बी सुपरफिशियल और डीप, राइट? अगर ये सिर्फ सुपरफिशियल लीजन है तो उसमें तो वी विल सी ऑल द कार्डिनल सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड द डिप्रेस स्कार्स या फिर नोड्यूल्स मिल सकते हैं. बट अगर डीप इन्फ्लेमेशन है, डीप लीजन है, तो उसमें हमें कोई भी सुपरफिशियल फाइंडिंग नहीं दिखेगी. द स्किन विल जस्ट अपीयर puckered, the skin will be tethered to the underlying structures like the bone, fascia, muscle, right? So it will be tethered to the underlying structures जिसकी वजह से puckering मिल सकती है. ठीक है? तो these are the clinical features. अगर lesion superficial है then you will find superficial lesions and their appearance depends upon the activity, and if it's a deep lesion you will just find puckering and tethering of the skin to the underlying structures. Now coming to classification. तो क्लासिफिकेशन जो रुक्स में दी गई है दैट इज़ स्लाइटली कन्फ्यूजिंग एंड फ्रेंकली बताऊँ तो मुझे समझ नहीं आया कि कैसे क्लासीफाई किया हुआ है. तो मैंने इसकी एक अपने आप ही एक क्लासिफिकेशन सोची है एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन डेप्थ, राइट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट. तो अगर आपने बर्न्स की क्लासिफिकेशन देखी हो तो बर्न्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ द लीजन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी सर्फेस एरिया इन्वॉल्व, एंड बोथ आर डिफरेंट, राइट? डेप्थ एक अलग चीज़ है, कितना डीप लीजन है, एंड एक्सटेंट ऑफ बॉडी सर्फेस एरिया एक डिफरेंट तरीका है ऑफ कैटेगराइजिंग, राइट, ऑफ क्लासीफाइंग. तो वैसे ही मॉर्फिया कैन ऑल्सो बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट, राइट? तो डेप्थ के बेसिस पे इट्स वेरी सिंपल, इट कुड बी सुपरफिशियल और डीप. तो सुपरफिशियल जब इन्फ्लेमेशन या द डिजीज इज ओनली लिमिटेड टू द एपिडर्मिस एंड डर्मिस तो इट्स कॉल्ड एज सुपरफिशियल और अ डर्मिस, राइट? एंड अगर डीपर स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है देन इट इज़ कॉल्ड एज अ डीप लीजन, राइट? एक्सटेंट के बेसिस के लिए वी हैव डिवाइडेड द ह्यूमन बॉडी इनटू 7 regions. One is the head and neck, then there is the anterior trunk and the posterior trunk, and 4 limbs.
तो 7 रीजन्स हैं ह्यूमन बॉडी में, एंड डिपेंडिंग अपॉन कि कितने रीजन्स में लीजन्स हैं मॉर्फिया के, वी हैव डिवाइडेड इट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट इनटू 4 टाइप्स, राइट। तो सबसे सिंपल है कि लिमिटेड, अगर 1 या 2 रीजन्स में ही प्रेजेंट है मॉर्फिया तो इट इज़ कॉल्ड एज अ लिमिटेड मॉर्फिया। जनरलाइज्ड मॉर्फिया तब कहते हैं व्हेन मोर देन 2, दैट इज 3 to 7 रीजन्स में प्रेजेंट है। Then there is a distinct category called linear morphea, and finally we have a mixed morphea. Most common region जहाँ पे morphea पाया जाता है that is the trunk. तो if you don't remember anything about morphea, just remember कि सबसे commonly trunk पे ही होता है, right? For all, whether it's limited, whether it's generalized, superficial, deep, whatever, सारे morpheas में सबसे common location is the trunk, right? अब फ्रॉम अ लॉजिकल परस्पेक्टिव लिमिटेड मॉर्फिया तो एक्सटेंट के बेसिस पे कहते हैं, बट लिमिटेड मॉर्फिया कुड बी सुपरफिशियल और डीप। वैसे ही जनरलाइज मॉर्फिया कुड बी सुपरफिशियल और डीप, लीनियर मॉर्फिया कुड ऑल्सो बी सिमिलरली क्लासिफाइड, एंड मिक्स मॉर्फिया भी हो सकता है सुपरफिशियल एंड डीप, बिकॉज ये डेप्थ के बेसिस पे कह रहे हैं एंड ये हम बॉडी सर्फेस एरिया के बेसिस पे कह रहे हैं, तो इसीलिए देर इज़ स्लाइट कन्फ्यूजन बिटवीन द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। बट आई थिंक अगर हम इनको सेपरेटली पढ़ें तो ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। अच्छा, वन मोर थिंग इज दैट लीनियर मॉर्फिया को सेपरेट क्यों बनाया गया है, राइट? तो लीनियर मॉर्फिया एक सेपरेट एंटिटी रखी गई है बिकॉज इसमें और बाकी मॉर्फियाज में देर आर सम डिफरेंसेस। तो एज वी नो ये तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में सबसे कॉमनली पाया जाता है, राइट? वेयर एज दिस इज कॉमन इन यंगर चिल्ड्रन, इन द यंगर एज ग्रुप, राइट? तो लाइक लेस देन 10 years, वेयर एज दिस इज अराउंड 40s, right? Then male to female ratio, then female to male ratio, it is around 2 to 4 is to 1 when it comes to linear morphia, but for rest of the morphias it is like 10 is to 1, and this ratio is less skewed in linear because ये younger age group में होता है जहाँ पे estrogen and progesterone अभी active ही नहीं हुए, that is why the ratio of female to male is less skewed in linear morphias as compared to other morphias, ठीक है? थर्ड इज कि लीनियर मॉर्फिया जो होता है इट अकर्स अलोंग द लाइन्स ऑफ ब्लाशको, राइट? वेयर एज यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड फाइनली लीनियर मॉर्फियाज आर मोर कॉमनली यूनिलैटरल, वेयर एज दीज आर लेस कॉमनली यूनिलैटरल एंड दे आर मोर कॉमनली बायलैटरल, राइट? सो कुछ डिफरेंसेस थे बिटवीन लीनियर मॉर्फिया एंड अदर मॉर्फिया, एंड दैट इज वाई अ डिस्टिंक्ट कैटेगरी हैज़ बीन क्रिएटेड। तो लिमिटेड मॉर्फिया, तो लिमिटेड का मतलब ही होता है कि दे विल अकर इन 1 or 2 रीजन्स एट मैक्स। तो मोस्ट कॉमनली कौन सा रीजन है? ट्रंक। मोस्ट कॉमन रीजन दैट इज इन्वॉल्व इज द ट्रंक एंड स्पेशली द ब्रेस्ट्स, बट classically all morphias they spare the nipple and digits, right? So for some reason these areas are spared and the rest of the body can be involved. तो सारे लिमिटेड मॉर्फियाज में जो कॉमन फीचर होगा दैट इज कि वो up to 2 regions में होंगे, they will be more common in the trunk and they will spare the nipple areola and the digits, right? तो coming to superficial limited morphias और limited superficial morphias, तो इसमें 4 named entities हैं, right? One is plaque, then guttate, then keloid and atrophoderma of Pacini Pierini, राइट? तो 4 नेम्ड एंटिटीज़ हैं विच आर इंक्लूडेड इन लिमिटेड सुपरफिशियल। अब अगर कोई सुपरफिशियल लीजन है तो उसमें ऑब्वियसली सिम्टम्स डिपेंड अपॉन द स्टेज, राइट? वेदर इट्स एन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी स्टेज और वेदर इट्स इन अ क्रॉनिक लेट डैमेज स्टेज, राइट? तो प्लाक वाले में द लीजन्स आर यूजुअली दे अपीयर लाइक प्लाक्स मोर देन 1 centimeter इन साइज, राइट? बाकी ट्रंक पे होगा, निपल एरियोला एंड डिजिट्स को स्पेयर करेगा, 1 to 2 रीजन्स में होगा, दैट इज ऑल ऑब्वियस बिकॉज वो लिमिटेड सुपरफिशियल में आता है, राइट? गटेट में लीजन्स विल बी लेस देन 1 centimeter एंड मल्टीपल। प्लाक मॉर्फिया में
the number of lesions is less, but they are usually more than 1 centimeter and they appear like plaques. Right? Guttate morphea mein the number of lesions is more, and but the size is less. Right? Baki is true that the most common site is trunk and they spare the nipple and the digits, and the superficial hair, so symptoms will depend upon the activity of the lesion, and classically they heal with hyperpigmentation. Now coming to keloid, ये भी superficial lesions होते हैं, limited होते हैं, trunk पे most commonly होते हैं, that is true. But इसमें instead of healing with depressions, the lesions this tend to become keloidal. ठीक है, तो वो keloidal या nodules की तरह ऊपर skin surface से project करता है, and that is why it is called as keloidal morphea. And finally we have atrophoderma of Pacini and Pierini. So atrophoderma of Pacini Pierini, right? तो नाम में ही है एट्रोफोडर्मा, तो it must have a lot of atrophy. तो it is again it's a superficial limited variant of morphea. तो 1 to 2 regions में मिलेगा, trunk पे मिलेगा, sparing of nipple and digits होगा, superficial lesions होंगे. But unlike keloidal lesions, they tend to have a depressed appearance. तो जब ये fibrose होता है या जब fibrotic stage में होता है, the lesions they tend to become depressed, and therefore it presents with hyperpigmented depressed patches. And the margins are very sharp or very steep. Margins जो होते हैं वो patch के, they are very steep, and that is known as a cliff drop border. Okay, coming to the deep limited morphea. अब limited morphea तो 1 to 2 regions में ही होगा, most commonly trunk पे होगा, sparing of nipple and digits होगा, that is there. But deep morphea, therefore the lesions extend to the deeper tissues, right? And clinical features कैसे होंगे? The skin during the fibrotic stage, the skin will appear puckered or tethered to the underlying structures. Coming to generalized. So generalized morphea, जैसा कि नाम में ही है, it will happen in more than 2 regions. तो 3 to 7 regions में पाया जाएगा, right? अब इसमें 3 named entities हैं. Mostly generalized morphea सारे deep होते हैं, but they could be superficial also. Mostly are deep but could be superficial. तो one is disseminated plaque morphea. Then there is pansclerotic morphea, and one is eosinophilic fasciitis. So disseminated plaque morphea, तो ये एक generalized morphea का सब type है, that is more than 2 regions will be involved. Most common trunk, that is true for all morpheas, right, barring few. And disseminated है, plaque की तरह lesions होंगे, right? तो plaque like lesions most commonly on the trunk, more than 2 regions will be involved, and most of these lesions are deep but some may be superficial also, right? Pansclerotic is a very severe disease जिसमें almost 100% of the body surface area is involved, except the nipple and digits, right? Nipple and digits छोड़ के बाकी पूरा body surface area is involved. And classically इसमें जो difference पता होना चाहिए, that is it occurs more common in children. Unlike बाकी morphea जो कि middle age reproductive age group में होता है, ये बच्चों में ज़्यादा common होता है. And last is eosinophilic fasciitis. इसमें जो characteristic feature है, that is it is symmetric involvement of both lower limbs, right? That is one. Second is you will find peripheral eosinophilia, and अगर हम इसकी histopath देखें तो उसमें you will find a lot of eosinophils
नाम में ही eosinophilic fasciitis है, right? So you will find eosinophils. And lastly, fasciitis है, right? So there is a lot of inflammation along the fascia, along the septae or the fascia. A lot of inflammation and a lot of fibrosis is there, right? Coming to the linear variant, so linear morphea में there are two types. One is the head and neck type subtype, and the one is the limb trunk subtype, right? So head and neck subtype में there are two named entities. One is incube Duceber. तो Morphea incube Duceber, it's a linear variant. अब linear में जैसे पहले बताया था, they are more common in children, they are along the lines of Blaschko, and they are more commonly unilateral, and female to male ratio is around is less skewed 2 to 4:1. तो ये सारे लीनियर मॉर्फियाज में ट्रू है, बट कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं विच विल डिस्कस. तो एनकूब डिसेबर में बेसिकली क्या होता है, फ्रंटोपराइटल लोकेशन में पैरामीडियन एक सिंगल लीजन होता है अलॉन्ग द लाइंस ऑफ ब्लास्को. बाकी जो लीनियर मॉर्फियाज के लिए ट्रू है वो इसके लिए भी ट्रू है. एंड इसमें जो खास बात होती है दैट इज इट इज़ associated with a lot of neurological complications like headache and seizures, right? Second जो subtype है head and neck variant है, that is progressive hemifacial atrophy, right? So progressive hemifacial atrophy, which is also known as Parry-Romberg syndrome, right? So this is also characterized by involvement along the lines of trigeminal nerve, along the branches of the trigeminal nerve, and इसमें a lot of ocular complications, dental complications, and neurological complications are seen, right? Coming to the limb and trunk variants of linear morphea, इसमें there are only two named entities. One is linear deep atrophic morphea, and second one is known as linear atrophoderma of Mulin. इनमें कोई खास फीचर नहीं होता, जस्ट नो दैट दे आर लीनियर, तो इसलिए चिल्ड्रन में होंगे, लाइन्स ऑफ ब्लैश के होंगे, यूनिलैटरल होंगे, फीमेल टू मेल ये होगा, लिम्स एंड ट्रंक पे ज़्यादा होते हैं, एंड दे आर डीप, बोथ ऑफ देम आर डीप. तो जो फीचर्स डीप के लिए ट्रू हैं वो यहाँ भी ट्रू होंगे. So coming to the complications. So complications of morphea can arise due to the disease itself, or they could be because of extracutaneous manifestations, or they could be because of other autoimmune diseases which are associated with autoimmune spectrum, right? So coming to the disease complications of the disease itself. So the most common complication is a cosmetic or a cosmetic complication, right? So that is a big problem. Because of this cosmetic problem, a lot of patients, they develop psychological issues including anxiety, depression, etc. So psychological complications are also very important in this case. Third, it can also affect joints and bones, leading to limb discrepancies, contracture of the joints. Therefore it can lead to musculoskeletal complications, right? Then those morpheas which tend to occur on the head and neck region, they can have a lot of neurological complications like headache, seizures. Then they may have ocular complications, for example enophthalmos, retinal detachment, retinal vasculitis, etc. And then they may have dental complications like dental malocclusion. Coming to the extracutaneous manifestations, like all other autoimmune diseases, they may have, patients of morphea may have extracutaneous manifestations also. So the most common extracutaneous manifestations are esophageal dysmotility, gastroesophageal reflux, then
valvular abnormalities, etc. Right? And finally, they may have other autoimmune diseases like type 1 diabetes, thyroiditis, systemic sclerosis, arthritis, etc. Right? So that may lead to complications. So coming to the prognosis of morphea, in general, patients who have superficial or limited disease have a good or a better prognosis. Right? So that is obvious. So coming to management. So first we need to diagnose the disease, right? So normally morphea is a clinical diagnosis, and the investigations are only done to rule out other diseases or to rule out any other complications or extracutaneous manifestations, right? So normally you don't get anything other than a skin biopsy, uh, complete blood cell count, an autoantibody panel, and in case it's a head and neck variant, you should get a CT, MRI, or an EEG done just to rule out any complications. So how do we assess the severity of the disease? So like we have the modified Rodnan score for systemic sclerosis, we have the LOSCAT tool for morphea. So the LOSCAT stands for Localized Scleroderma Cutaneous Assessment Tool. So it has four parameters. One is the activity index, one is the damage index, one is the patient global assessment score, and one is the physician global assessment score, right? So based on that we have a score, and that can be used to measure the severity of the disease. Now coming to the last part, that is how do we treat it. So the treatment basically depends on the stage of the disease. So most of the anti-inflammatory drugs, they are only to be given if the patient is having an active lesion. So if there is no active lesion and the patient is only presenting with a fibrotic late sclerotic stage, there is no point in giving an anti-inflammatory. So if it's a superficial lesion, you can give a topical corticosteroid, an intralesional corticosteroid, topical tacrolimus. Then we have topical calcipotriol. If it's a more extensive disease, then we can go for phototherapy with or without psoralens. In case the disease is deep, or if it is a widespread severe debilitating disease, then we will like to give a systemic steroids. Along with systemic steroids, we like to give steroid sparing agents or DMARDs. So most commonly we give methotrexate, cyclosporin, mycophenolate, and some biologics like abatacept are given. So for patients who present with the sclerotic stage, the treatment is basically directed at improving the cosmesis or the functional outcome of the patients. So that can be done by autologous fat transfers, dermal fillers, then release of contractures, correction of limb length discrepancies, etc.